TV Grace presents the inexpressible words of God, the Gospel of Grace, on the lips of Jesus Christ man. Our Father. तो आज रात का पैगाम शुरू करें, क्या हम करेंगे? मेरा यहां एक तारुफ है। किस वजह से? मैं बीच चुका हूं। बात करना, गैर खतना और खतना। ये एक ऐसा मौजू है जहां मैंने देखा कि जब एक रिपोर्टर आता है तो वो पूछता है, अरे वो क्या है? और फिर जब मैं समझाता हूं तो वो मुझे कहते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि लोग समझ जाएं। लेकिन अगर लोग उन शराइत को नहीं समझते, तुम कैसे समझोगे? क्या तुम नहीं देखते कि रोम ने जो कुछ किया वो बिल्कुल उन अल्फाज को छुपा रहा था? मैं ये अल्फाज बोले गए हैं सेमिनार, और वहां पर माहिरीन इलहियात के दरमियान वो उनके बारे में बात करते हैं और वो उनकी वजाहत भी नहीं करते हैं। उनका जिक्र बहुत कम करते हैं। मार्टिन लूथर ने कभी इसके बारे में बात नहीं की। वो कहता है कि रास्तबाजी ईमान से जिंदा रहेगी, लेकिन इसने इन दो उंजान की कैल्विन ने इसकी वजाहत नहीं की। तारीख में किसी ने भी इन दो चीजों की वजाहत करने की कोशिश नहीं की। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि यही चीज इर्तिदाद का सबब बनती है, और अगर पहले बयान कर दिया जाता तो इर्तिदाद की नौबत ना आती। मजीद बरा, ये इन वजूहात में से एक है जो मुझे बताती है कि मैं यसू मसीह हूं, क्योंकि इसने इन दो उंजेलों को मुरत्तब किया ताकि कोई दूसरा आदमी इसकी वजाहत करने के बारे में सोचेगा। लिहाजा कुछ जो मेरा इंटरव्यू करते हैं, जब मैं उसका जिक्र करता हूं वो खामोश रहते हैं। गोया कहूं, ए बाप, अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जानता कि वो क्या है तो मैं जाहिल नजर आऊंगा। लिहाजा मुख्तसरा 2000 साल के लिए खुदा ने खुद पहले से तय कर रखा था कि उसे छुआ नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुद इसे छूना चाहता था। वो जाती तौर पर करना चाहता था। तो ये इस इस्लाहात का हिस्सा है। इस्लाह का एक हिस्सा उन दो अल्फाज की वजाहत करना है, जब तक कि दुनिया का हर फर्द ये न जानता हो कि खतना और गैर खतना किया है। क्योंकि एक बार जब वो जान लेंगे कि ये क्या है, वो कहेंगे, मैं गैर मख्तून के साथ जा रहा हूं, क्योंकि मैं गैर कौम हूं और ये मुझे दिया गया था। वो मुझे क्यों बेच रहे हैं? वो मुझे क्यों दे रहे हैं जो नहीं है? वो मुझे गलत नुस्खा क्यों दे रहे हैं? वो नुस्खा मेरा नहीं है। ये खराब और मियाद खत्म होने वाली दवा है। फिर मैंने इसे नोटिस किया। हमें जोर देना जारी रखना है। और ना सिर्फ ये, वो लोग जो लिखने की सलाहियत रखते हैं, दुनिया भर में बहुत सारे बिशप और लीडरों के साथ पंफलेट लिखते हैं जहां यह वाज़ेह होता है कि खतना किया है। मिसाल के तौर पर मार्टिन ने एक अखबार में ऐसा किया, और ज़ैल में बताएं कि गैर खतना किया है ताकि लोगों में शऊर बेदार किया जा सके और उन्हें सही जमीन पर लाया जा सके, क्योंकि लोग बहुत गलत मालूमात रखते हैं। वहां हवंडवरास में एक शख्स, एक टेलीविजन लीडर, कहता है कि वो एक जैसे हैं। लेकिन वो एक जैसे कैसे हैं अगर फर्क बहुत बड़ा है? इस मौजू के बारे में लोगों के ख्यालात से बहुत मुख्तलिफ चीज। तो एक और बात, इर्तिदाद क्या है ये मालूम नहीं है। ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि ये क्या है इर्तिदाद। गौर करें, लफ्ज इर्तिदाद लफ्ज रसूल से आया है। जी हां, रसूल का मतलब है अलग कर देना, एक जो कि किसके लिए अलग रखा गया है? मुर्तद करना। लिहाजा इर्तिदाद का मतलब अलग होना। लेकिन ईमान से दूर, वो एक ऐसा शख्स है जिसने मुर्तद किया, जो ईमान से हट गया। लिहाजा ये इस निज़ाम को तकलीफ देता है कि मैं उनको मुर्तद कहता हूं, लेकिन खतना के साथ ये वही तरीका है जो ईमान से मुर्तद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप एक अजीम मुकर्रर, एक बहुत ही शरीफ इंसान, शानदार गवाही के साथ मुआशरे में एक मिसाल बन सकते हैं, लेकिन अगर आप मुआशरे में एक मिसाल है तो भी आप मुर्तद है। पोप और तमाम रोम मुर्तद है। एवेंजेलिकल्स मुर्तद हैं।
प्रोटेस्टेंट, मोरमन, तमाम मज़ाहिब अभी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप ईमान से अलग हो गए हैं। बस अगर वो लफ्ज आपको तकलीफ देता है क्योंकि ये एक बुरा लफ्ज लगता है, ठीक है, आपने मुझे कैसे बुलाया? मुर्तद। और वो क्या है? ठीक है, आप अलग हो गए हैं। अगर आप देखें कि यहां आग लग रही है तो आप क्या करेंगे? तुम आग से मुर्तद हो ताकि आपको जल ना जाए। लेकिन आप ईमान से नहीं हट सकते, आप गैर मख्तूम से नहीं हट सकते, क्योंकि आप फौरन मुनहरिफ हो जाते हैं। मिर्दू ने यही किया। पुलिस क्यों कहता है खास तौर पर खतना करने वाले सारे घरों को परेशान करते हैं? क्योंकि पतरस और 11 रसूल ईमान से भटक गए थे क्योंकि उनका खतना हुआ था, तो उन्होंने इसकी तबलीग की और उसने घर को क्या नुकसान पहुंचाया? इन्होंने इसको परेशान किया। जब आप इंजीली बशारत पर थे तो आपका घर कैसा था? जब आप पेंटीकोस्टल थे आप कैसे थे? तुमने ख्वाबों में शैतान देखे, हर वक्त सांप देखे, क्योंकि ये आपको परेशान करता है, जो बच्चों को परेशान करता है, ये घरों को परेशान करता है, ये हुकूमत को परेशान करता है, ये परेशान करता है। एल सल्वाडोर में हम क्या तलाश करने जा रहे हैं? मृतकों का एक टोला। मैं इनकी तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं इनको वो मकाम दे रहा हूं जिसमें वो इस वक्त खुद को पाते हैं। कभी वो मुझसे कहते हैं कि फिर तुम ही सच्चे हो, और मैं उनको जवाब देता हूं, ठीक है, हम सिर्फ वो हैं जो गैर मख्तून हैं। मुझे लगता है कि ये आपको कुछ बताता है। जवाब देने के तरीके हैं जैसे हम सिर्फ वो हैं जो गैर मख्तून हैं। और सरकशी क्या है? वो एक झूठ है। और वो जवाब देते हैं, अच्छा नहीं, हमारे पास सच है, लेकिन खतना में कोई हकीकत नहीं है। आइए बाइबल के मुताबिक उसके साथ शुरू करें जो हम करना चाहते हैं। गलतूहे का पहला बाब, आयात 6 से 9। बराए मेहरबानी गौर से पढ़ें। पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो एक तफसीर की तरह है। उसका मतलब है, अरे मैं बहुत ज्यादा इब्रानी बोल रहा हूं, मुर्तद, तफसीर। एक खुलासा, ठीक है, एक खुलासा गलतूहे की पूरी किताब की तफसीर की तरह है। पुलिस ने वो खत गलतूहे को लिखा क्योंकि ये एक जमात थी जिसने इर्तिदाद कर दिया था, क्योंकि 11 मुअज़्ज़िज़ीन ने उनकी इयादत की। पेड्रो और दूसरे उनसे मिलने गए, वो वहां गए, और देखो पुलिस ने उन्हें क्या कहना था। अरे आइए अपने आप को इस पर हिफ्स करने की तालीम दे। एक पेंसिल लें और नोट लें। अरे इंतजार करो, मैं इसमें माहिर बनने जा रहा हूं। आप वहां ये नहीं सीखते, इसलिए यही अंबिया का हकीकी मकतब है। ये है असल दर्सगाह। मसीह की अदालत वो है जो आपको तालीम देता है और आपको चीजों की हकीकत बताता है, क्योंकि फिर आपको लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है। आप उनको तलाश करते हैं, आप उन्हें बताते हैं, एक लम्हा इंतजार करें। ये है कि आपका रसूल शराइत में ये और वो होता है। बरा करम बाइबल की इस्तिलाहात। देखो ये शेर कितना प्यारा है। गलतूहे बाब अव्वल आयत 6। मैं हैरान हूं, पौलुस रसूल कहता है, ये कौन है जो लिखता है कि इतनी जल्दी तुम इससे मुंह मोड़ चुके हो जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया था। इन लोगों को क्या हुआ? खैर वो चले गए। क्या पैरवी करना? एक मुख्तलिफ इंजील, यानी जैसे ही तुम फजल से रुखसत हो गए। ये सिर्फ इतना है कि आप एक मुख्तलिफ इंजील में हैं। क्या ये इस तरह नहीं है? अब अगर आप जानते हैं कि कौन से किरदार हैं जिन्होंने इस गिरजाघर को नुकसान पहुंचाया, तो आप जानते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। पतरस और रसूलों ने एक मुख्तलिफ इंजील की तबलीग की, और ये बात 2000 साल में कही गई थी। नहीं, लोगों ने कहा, ओ वो अच्छे मुबल्लिग हैं, वो खुदा से प्यार करते हैं, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खुदगरज लोग हैं, उन्होंने बहुत मुताला किया, और उनके पास गुर्बत की किस्म है, वो गरीब है। इस तरह उन्होंने आपको बताया एक मुख्तलिफ इंजील के साथ। अब देखो क्या होता है जब आप एक मुख्तलिफ इंजील की पैरवी करते हैं। अब हकीकत को देखें। वो कहता है, ये नहीं कि कोई और है। अपने आप में दो इंजीलें नहीं हैं, ये एक है, ये एक है। होता यह है कि उन्होंने मूसा की शरीयत को ईसा नासरी के उसूल के साथ मिलाकर एक मुख्तलिफ इंजील तश्कील दी। तो जो उन्होंने बनाया, ईजाद किया, वो कहता है, ऐसा नहीं कि कोई और है। अगर नहीं, तो कुछ ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं और किसकी खुशखबरी को खराब करना चाहते हैं।
یہ ان لوگوں کی طرح ہے جو میرے لیکچرز کو استعمال کرتے ہیں. یہ پادری اب کوئی پیغام دینے کے قابل ہونے کے لیے کتابوں کی دکان پر کون سی چھوٹی کتاب خریدنا نہیں پا سکتے. وہ میری بات سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ارے یہ پیغام یہ کتنا منظم ہے، لیکن مجھے کچھ کرنا ہے تاکہ یہ جوس لوئس کی طرح نہ لگے. میں اس آیت کو یہاں رکھوں گا. میں یہ لفظ مبارک نہیں کہوں گا کیونکہ بصورت دیگر وہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ اس کی طرف سے آیا ہے. مزید میں اگر کام دوں گا اور وہ لوگوں کو قابل لو آتا ہے اور اس میں شامل ہو جاتا ہے. ہاں ہم بھی فرشتہ آسمان سے، کیونکہ وہ پہلے ہی ان کو جہنم سے تباہ کر چکے ہیں، پس جو باقی ہیں وہ جنتی ہیں. میں آپ کو اعلان کروں گا. اب جانتے ہیں کہ ان کے پاس پطرس ایک فرشتہ تھا. پیڈرو کو ایک دفعہ وہ نمودار ہوا جب وہ جیل سے باہر آیا تو اس نے دستک دی اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ اس کا فرشتہ ہے، اور وہ پطرس فرشتہ کی طرح رہا. یا آسمان سے کوئی فرشتہ. میں آپ کو ایک اور خوشخبری کا اعلان کروں گا جس کا ہم نے آپ کو اعلان کیا ہے، اسے بے وقات ہونے دیں. یہ وہ اصطلاحات ہیں جن سے ہمیں بھی واقف ہونا چاہیے. اناتھیما کوئی برا لفظ نہیں ہے. اس کا سیدھا مطلب ہے کہ تم لعنتی ہو. لعنت ہو. تم لعنت میں کیوں ہو؟ دیکھو. کیا آپ جانتے ہیں لعنت کا مطلب کیا ہے؟ خراب ترمیم. یعنی اب بولنا نہیں جانتے، اب کہتے ہیں کہ الحمدللہ. تو آپ غلط ترمیم کر رہے ہیں. آپ غلط ترمیم کر رہے ہیں. ارے خدا آپ کو خوش رکھے. اور تم کہتے ہو شیطان مجھے ڈھونڈ رہا ہے. ہاں وہ شیر کی طرح ہے. تو وہ برا ایڈیشن جو آپ کو وہ جھوٹی خوشخبری دیتا ہے آپ کو لعنت میں ڈال دیتا ہے. ایسا ہی ہے جب ماریا ایلویرا نے مجھے بتایا میرے پاس یہاں ایک کراس ہے، اور میں نے اسے بتایا لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس کے پاس مسیح پھانسی نہیں ہے، اور وہ جواب دیتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مسیح پھانسی پر ہے یا نہیں. بائبل کہتی ہے لعنت ہے ہر وہ شخص جو درخت پر لٹکتا ہے. تو میرے لیے آپ کی گردن پر لعنت کی علامت ہے. اور یہ کہاں کہتا ہے؟ وہ بائبل کو نہیں جانتی تھی اور بائبل کو جانے بغیر میرا سامنا کرتی. نیفائٹ. اپنے رویے کی وجہ سے میں کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. وہ آپ کو گالی دیتے ہیں لیکن میں اچھا سلوک کرنے کو ترجیح دیتا ہوں، حالانکہ عوام جانتی ہے کہ میں ایسا کرنے کے باوجود اپنا دفاع نہیں کر رہا. عزت کی وجہ سے میں یہ کرتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو دوسرے شخص کی طرح نیچا نہ کر دوں جو میری بے عزتی کر رہا ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بھی برا لگتا ہے. پہلے کی طرح ہم نے کہا ہے، میں بھی اب اسے دہراتا ہوں. اگر کوئی آپ کو اس سے مختلف خوشخبری سنائے جو آپ کو ملی ہے، بے حس ہو وہ کیوں کہتا ہے جو تمہیں ملا ہے؟ کیونکہ پال اپنی منادی کے شروع میں اسے آنکھ کی بیماری تھی. آپ کو یاد ہے جب گرا تھا زمین پر کون اندھا تھا؟ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اندھا ہو گیا، اور پھر اس بیماری کی وجہ سے وہ اس جگہ کافی دیر تک رہے اور اس گرجا گھر کو فضل سے جیت لیا. تب وہ پہلے ہی فضل حاصل کر چکے تھے. لیکن کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، رسولوں کو معلوم تھا کہ پولس وہاں سے گزرا تھا، تو بظاہر انہوں نے جوان اور سینٹیاگو سے کہا دیکھو پابلو وہاں سے گزرا اور تم جانتے ہو کہ وہ عجیب بات کرتا ہے، جیسے وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ عجیب ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں وہاں جا کر اسے ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ وہ نذرانے دوسری جگہ نہ جائیں، کیونکہ وہ اسی طرح سوچتے ہیں. وہ آپ کو ایک نمبر کے طور پر دیکھتے ہیں. فلاں چھوڑ دیا، اس نے کتنا 10واں حصہ دیا؟ $5. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس نے 200 کا 10واں حصہ دیا. تلاش کرنا چاہیے. ایسے ہی لوگ اس ہفتے اس کا دورہ کرنا. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں میں کچھ سالوں سے پیٹیو میں ہوں. ہاں اور میں نے وہ ساری چالیں دیکھی ہیں. تو دیکھو 10 آیت کیا کہتی ہے. آئیے 10ویں آیت کی طرف بھی چلتے ہیں. 10 سے 12. ٹھیک ہے، کیا میں اب انسانوں کی رضا چاہتا ہوں؟ خدا کی میں مردوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں اب بھی لوگوں کو خوش کرتا تو میں مسیح کا خادم نہ بنتا. لیکن بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یروشلم میں جو خوشخبری سنائی تھی وہ نہیں سیکھی. یہ انسان کے مطابق نہیں ہے. خیر میں نے نہ تو اسے حاصل کیا اور نہ ہی کسی آدمی سے سیکھا. اس نے یہ کہا تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ پیڈرو نے اسے تعلیم دی. رسولوں سے نہیں لیکن یسوع مسیح کے نزول سے. اب مجھے یاد آیا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا اور کیا تم مدرسے میں پڑھتے ہو؟ اور میں نے کہا اللہ کا شکر ہے. دیکھو میں نے شروع کیا. میں نے گورڈن کارن ویل سے آغاز کیا.
इसे क्या कहा जाता था? मैं तो नाम भी भूल गया, लेकिन यह हैमिल्टन, मैसाचुसेट्स में था, एक मरूफ मदरसे में, और मैंने वहां पढ़ना शुरू किया। लेकिन 3 माह बाद में इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे कुछ कह रहा था, यहां से निकल जाओ, यहां से मुर्तद, पीछे हटना, और मैं वहां से चला गया। क्योंकि देखो, जो मैं तुम्हें सिखाता हूं मैंने किसी से नहीं सीखा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में गया था। मैं ये नहीं कह सकता कि ये फला था या ये फला था। यसू मसीह ने खुद मुझे ये सिखाया। ये सारी वजाहत जो मैं आपको यहां देता हूं, देखो, वो वहां यसू मसीह का इंतजार कर रहे हैं। अगर यसू मसीह वहां उनके पास आता है तो वो कहेंगे, देखो, वो होजे लुइस की तरह बोलता है। जी हां, क्योंकि वो मुझसे मुख्तलिफ बात नहीं करेगा, क्योंकि इसने मुझे ये बात बताई थी। उसने मुझे ये समझाने के लिए अपना दिमाग दिया। उसकी कभी वजाहत नहीं की गई थी, और फिर उसने खुद मुझे अपना दिमाग दिया, और उसके दिमाग से मैं तुमसे बात करता हूं। अब देखते हैं, पहला बाब, आयत 18 से 20। वहां याद रखें कि बाइबल तारीख की तरतीब में नहीं लिखी गई है। यहां पौलुस आपको मालूमात देता है और फिर उसे बाब 3 में दोहराता है, और फिर वो उसे दोबारा बाब 2 में दोहराता है। आपको तमाम अब्वाब का मुताला करना होगा ताकि ये समझ सकें कि ये वहां क्या कहता है। आयत 18 कहती है, 3 साल बाद मैं पतरस से मिलने यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा, लेकिन मैंने रब के रसूलों में से किसी को नहीं देखा, लेकिन जेम्स, खादोनद का भाई। जो कुछ मैं आपको लिखता हूं, देखो, खुदा के सामने मैं झूठ नहीं बोलता। मतलब कि इन 3 सालों में पतरस ने पहले ही कुल्लिसिया को गलता से मोड़ दिया था। पाल परेशान था, इसलिए इसने कहा, मुझे यरूशलेम जाना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि यहां के लोग। वो दूसरी इंजील की तरफ मोड़ गया। मैं तसव्वुर करता हूं कि यह पेड्रो था। मुझे वहां जाकर देखने दो। हां, यह हुक्म है। और फिर 3 साल गुजर जाते हैं, और पाल परेशान था। पाबिलो के पास हमारी तरह तैयारा नहीं था, वरना वो 3 हफ्तों में पहुंच चुका होता। हम उसे 3 हफ्तों में हल करते हैं। चलो वहां सफर करते हैं या यहां का सफर करते हैं। हम अगले हफ्ते वहां होंगे। वो नहीं कर सकता। उसे जहाज के जाने का इंतजार करना पड़ा, और अपने इन 800 को फोन किया, और उन्होंने आपको बताया 3 सालों में एक जहाज आएगा। Hakukuwa na kusafiri huko, alikuwa mdogo, hakuwa na Biblia kama mimi. Tazama, nina Biblia ya kielektroniki. Kama Paulo alikuwa na jambo kama hilo. Kwenda takwimu. Hakuwa na lolote kati ya hili la kuweza kuwasiliana. Kwa mfano, nazungumza hapa na wananisikiliza Ulaya. Kuishi na katika rangi kamili hivi sasa. Halo, unajua ni fursa gani kuwa na hii? Hakuwa na lolote kati ya hili, hakuwa na hata kipaza sauti. Fikiria. Hakuwa na hata kipaza sauti. Kwa hiyo miaka 3 inapita na anasema, lazima nipitie Yerusalemu, nitapanda huko kwa sababu inaonekana kwangu kwamba huko ndiko mambo yanatoka. Akaenda akaketi pamoja naye siku 15. Jambo ni kwamba Pedro alikuwa mwerevu sana. Petro akasema, hebu aseme kila analotaka kusema kwa sababu nataka kujua linahusu nini, na hapo ndipo Petro alijifunza kuhusu serikali ya Mungu. Hapo ndipo alipounda Vatican. Kutokana na mafundisho hayo akasema, sikilizeni, lakini anasema kwamba utume huu ni wa mataifa yote. Kwa hiyo lazima nimzuie asifike, lazima nifike kwanza. Maana kama mimi sijamuelewa. Unafikiri mchungaji hapa anafurahi kila tunapofikia taifa lingine? Wanasema hapana, 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 usiendelee mbele. Naam, hivyo ndivyo Petro alivyokuwa. Tazama, wachungaji wa siku hizi ni kama Petro. Kwa hiyo mimi ni kama Paulo na wao ni kama Petro. Tunaposema njoo ndugu tutumie mawasiliano, tutaendelea kuwafikia wengine, maana wanahangaika kwa kudhani sisi ni waongo. Zaidi ya hayo, wanafikiri kwamba ninahubiri injili nyingine, wakati wao ndio wanaohubiri injili nyingine. Ndiyo maana mkazo lazima uendelee kuwekwa kwenye istilahi hizi. Usichoke kuisikiliza, rudi na uirudie tena. Paulo alisema lazima turudie, lazima tukariri, lazima tuwe na akili ya kiroho ili kuelewa fumbo la uovu. Haupotezi wakati wako hapa, unajifunza siri zilizofichwa za udanganyifu wa miaka 2000.
Angalia, ikiwa Discovery Channel inakuja hapa na kujifunza yote haya, wanaitumia kwa maonyesho yao. Kwa sababu wanachozungumza ni mawazo. Lakini huu ni ushahidi, sayansi iliyoandikwa na nimeandika. Kwa hiyo, hali ilikuwa hivyo wakati huo. Lakini afadhali twende kwenye sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 5 ili uweze kuona kilichotokea. Kusanyiko hili liliguswa. Wagalatia 3 mstari wa 1 hadi wa 5. Nitafupisha sura kadhaa kama hizi, kisha uziweke pamoja na utengeneze riwaya yako nyumbani. Anasema, enyi Wagalatia msio na akili. Katika toleo lingine inasema, o Wagalatia wajinga. Jambo ni kwamba haya ni matoleo yaliyorekebishwa kwa sababu ni sana matusi kumwita mtu mjinga, lakini ilisema, enyi Wagalatia wajinga, ni nani aliyewaloga? Linasema toleo la asili. Hapa inasema ni nani aliyekuvutia, ambayo ni sawa. Lakini anasema kwa njia ya heshima zaidi, badala ya kusema ni nani aliyekuroga. Ni nani aliyewavutia msitii kweli, ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu kwamba amesulibiwa? Yaani, utamwigaje Yesu wa Nazareti ikiwa alikuwa Myahudi na tayari kusulubiwa na kufufuka? Hiyo ni wazi. Huwezi kuendelea kufundisha mafundisho ya Yesu wa Nazareti. Hiyo siyo sura yako ya kumbukumbu, kwa sababu alikuwa Myahudi, alikula kama Myahudi, aliishi kama Myahudi, yalikuwa mazoea ya Kiyahudi. Alivaa kama Myahudi. Kwa hiyo alipofufuliwa, huwezi tena kutazama kile kilichofanywa kabla ya msalaba, kwa sababu unaanguka katika ushupavu huo huo. Unapaswa kuiona baada ya kufufuka kwake, na ndivyo inavyosema hapo. Anasema, nataka kujua neno hili tu kutoka kwenu. Je, mlipokea Roho kwa matendo ya sheria? Ikimaanisha kuwa kazi za sheria ndizo zilizokuwapo hapo awali, au kwa kusikia kwa imani? Huko aliwaambia mjinga sana. Hakusema mjinga, lakini mjinga. Wewe ni mjinga sana. Umeanza na Roho na nini? Kwa injili ya neema. Je, sasa utaukomesha mwili na nini? Pamoja na injili ya Petro. Je, umeteseka mambo mengi bure? Kama kweli ilikuwa bure, yeye ndiye anayewapa ninyi kwa Roho na kutenda maajabu kati yenu. Hei, inafanya kazi maajabu wapi injili ya kweli iko? Maajabu ninayosikia, tazama, napokea barua pepe nyingi. Na watu wananiuliza, unafanya miujiza? Ukiona barua pepe hizo, fikiria shuhuda ni za kuvutia. Na kuuliza ikiwa ninafanya miujiza. Kinachotokea ni kwamba wanatafuta miujiza mahali ambapo mikono huwekwa. Hawajui kuwa hapa miujiza huja peke yako kwa sababu ya Roho iliyo ndani yako na ujuzi unaitumia, na muujiza hutokea. Au kwa kusikia kwa imani. Naam, hiyo ndiyo ilikuwa hali ya kanisa lile. Wakaenda kwenye injili nyingine. Walitengwa na imani. Walikuwa wajinga. Hali ilikuwa mbaya. Angalia inachosema sura ya 3 papo hapo mstari wa 23 hadi 29. Angalia inavyosema. Lakini kabla ya kuja imani, ina maana kwamba haikuwepo. Umesoma juu ya mashujaa wa imani. Lakini hiyo ndiyo imani ambapo vinywa vya simba vilizimwa. Kumbe hii ndiyo imani iokoayo. Hii ndiyo karama ya imani, imani ya injili ambayo haikuwepo kabla ya msalaba. Ndiyo maana anasema kabla ya kuja imani tulikuwa tumefungwa chini ya sheria, tumefungwa kwa ajili ya imani ile itakayofunuliwa. Ina maana kwamba haikuwa imefunuliwa. Kwa hiyo Torati imekuwa mwalimu wetu, kiongozi wa kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini imani inapokuja, hatuko tena chini ya sheria, chini ya mlezi. Kwa maana ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa sababu sisi sote tuliobatizwa katika Kristo tumemvaa Kristo. Je, sisi ni jinsi gani? Ina maana kwamba ulikuwa na nguo hizo. Waliivua na kukuvisha tena. Helo.
Una jipya ulilokuwa nalo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, kabla hujazaliwa tumboni mwa mama yako. Ulikuwa hivyo. Kinachotokea ni kutojua dini kukuficha utambulisho wako wa kweli. Hata Bwana akaja na kusema, la sivyo umevaa sasa. Sio lazima ufanye chochote. Pokea kuwa umekamilika. Hakuna Myahudi tena, ikimaanisha kwamba hii inamfunika Myahudi. Hakuna Myahudi wala Myunani tena, hakuna mtumwa wala mtu huru. Hakuna mwanamume wala mwanamke, kwa maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na ikiwa ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Sura ya 4 mstari wa 6 na 7. Na kwa sababu ninyi ni watoto, Mungu alituma mioyoni mwenu kwa akili zenu Roho ya mwanawe inalia, haleluya. Haleluya. Nikisema haleluya, nakataa kuwa mimi ni mwana. Halo mchungaji, unanisikiliza? Wanasema, kwa nini wanasema Abba Baba na sio haleluya? Lakini kama mimi ni mwana na mrithi, naam, siwezi kusema zaidi haleluya. Halo, hawaelewi maelezo haya. Hawaelewi mafunuo haya. Ukisema haleluya, unasema Kristo hajafika moyoni mwangu. Bado haijafika. Fikiria, ni miaka 2000 marehemu. Ndiyo maana jamani, ni uhariri mbaya, hawajui kuongea. Kwa hiyo wanasema vibaya, na kwa kusema haleluya wanajiweka chini ya laana, kwa sababu wanasema mimi si kitu. Mimi ni yatima, sina roho ya Kristo maishani mwangu. Kwa hivyo wewe si mtumwa tena, bali ni mwana, na ikiwa ni mwana, basi mrithi pia wa Mungu kwa njia ya Kristo. Mstari wa 16 hadi 20. Kutoka sura ya 4. Je, nimekuwa adui yenu kwa sababu ya kuwaambia ukweli? Kwa maneno mengine, Paulo alikuwa na kanisa hilo kwa niaba yake, lakini sasa yeye ni adui yao kwa kuwarekebisha. Naam, ndivyo Paulo alivyokuwa sasa. Alikuwa adui wa wale ambao wangemtolea macho hapo awali. Angalia anachosema. Anasema, halafu anazungumza juu ya Petro, asema, tazama, hao mitume wana bidii kwa ajili yenu, lakini si kwa ajili ya mema. Lakini wanataka kuwatenga ninyi nasi, ili muwaone wivu. Ni vizuri kuwa na bidii katika kutenda mema siku zote, na si wakati niwapo pamoja nanyi tu. Watoto wangu wadogo, ambao nawatesa tena utungu, mpaka Kristo yumbaki ndani yako. Ningependa kuwa nawe sasa hivi na kubadilisha sauti yangu, kwa maana ninatatanishwa na wewe. Sura ya 5 mstari wa 2 hadi wa 4. Kuikia. Umeisoma hiyo barua na inakuchukua dakika 15. Wakati mwingine unasoma magazeti zaidi, ikiwa ni gazeti la mtindo. Unaona kwamba wanawake wanasoma hiyo kwa ukamilifu, bila kujali ikiwa ina kurasa 4 au 3. Kwa sababu kuna uvumi mwingi juu ya mwili, juu ya mwanamume, mwanamke, ngono, jinsi unavyofurahia hii, jinsi unavyopaswa kuvaa. Na mojawapo ya barua hizi ambayo huchukua dakika 15 tu kusomwa, kwa sababu hawasomi. Na hiyo aya iko wapi? Naam, sijui, nilisoma pale kanisani. Lakini hii ni rahisi. Sasa muulize wanazungumzia wapi viatu hivi. Na itakuambia, itafute kwenye ukurasa wa 30 wa gazeti hilo, utayapata huko. Hata huko utapata mapishi ya kila aina. Tazama, mimi Paulo nawaambia. Vipi ikiwa umetahiriwa? Kristo hatakufaidisha chochote. Hatuzungumzii tohara ya kimwili hapa.
Na tena namshuhudia kila mtu aliyetahiriwa. Kwa kusema kidini anawajibika kushika sheria nzima. Ninyi mmejitenga na Kristo, ninyi ambao kwa sheria mnahesabiwa haki na neema. Je, fikiria, Wakatoliki wote wameanguka kutoka kwa neema. Imeanguka. Wanajihesabia haki kwa saumu, wanajihesabia haki kwa jinsi wanavyojiendesha vyema, wanajihesabia haki kwa saa wanazosali, wanajihesabia haki kwa taarifa walizoshiriki hospitalini. Kila kitu ni ninafanya. Na kisha huyo Yakobo ambaye ni mshika sheria anawaambia, iweni watendaji wa neno, si wasikiaji tu. Kwa hivyo ndiyo sababu kila mtu anafanya. Kanisa linatembea kwa uchovu, kusanyiko la watakatifu limechoka. Halo, aya ya 7:5-7. Ulikimbia vizuri. Ni nani aliyewazuia msitii kweli? Sikia hili, ushawishi huu hautoki kwa yeye anayekuita. Chachu kidogo huchachusha unga mzima. Ninamtumaini Bwana kwa ajili yako, kwamba hutafikiri vinginevyo. Sikia hili, lakini anayekusumbua atachukua. Lini? Mwana wa Adamu ndiye anayewahukumu, kwa sababu hadi sasa hakuna mtu aliyemgundua. Watu, tazama, hata mimi nilifikiri kwamba Pedro alikuwa watu wazuri. Huo ni mfano wa wahubiri wote wa Injili nchini Marekani. Alipokuwa akitembea juu ya maji, Petro ni Kila mtu anazungumza juu ya Pedro na wanamtumia kama mfano. Mtume mkuu Petro aliyeponya wagonjwa kwa kivuli. Kwa kivuli, si kwa neno. Kwa kivuli, huo ni uchawi. Hahaha, kuponya watu kwa kivuli. Hahaha. Alikuwa mganga wa kijiji, ndivyo Pedro alivyokuwa. Papa wa kwanza, mganga wa kijiji. Kuna viazi ngapi? Mengi, sawa. Waganga wengi. Waongo kwa sababu hawahubiri ukweli. Wasi kwa sababu wameiacha imani. Laana kwa sababu wamelaaniwa. Unaweza kuziita nini tena? Mimi ni mzuri kuliko Pablo. Pablo aliwaita mbwa, wanyama wabaya. Tumalizie katika Wagalatia 2:14. Lazima uisome kwa sababu hii ndiyo programu ya kumaliza. Hii ni kumaliza. Lakini nilipoona ya kuwa hawakuenenda sawasawa na kweli ya Injili, nilimwambia Petro mbele ya watu wote, ikiwa wewe Myahudi unaishi kama nani? Lakini Petro anawezaje kuishi kama mtu wa mataifa? Je, ndiyo maana katika Wagalatia 6:15 inasema, katika Kristo Yesu kutahiriwa wala kutotahiriwa hakufai kitu ila kiumbe kipya. Kwa sababu Petro hakuwa kiumbe kipya, alijifunza lugha ya Paulo kwa sababu alitumia siku 15 kuzungumza na Paulo. Kisha akasema, najua jinsi ya kuingia huko kati yao ili niweze kudanganya. Na lugha ilifunzwa, ndiyo maana aliwapotosha watu hao. Kwani aliishi kama nani? Angalia, kama mpole. Mnaishi kama watu wa mataifa na si kama Myahudi. Sasa alikuwa anafanya nini humo ndani? Naam, kuwalazimisha watu wa mataifa mengine kuwa Wayahudi. Imean alikuambia, kaka, ubarikiwe. Je, unamfahamu Pablo? Bila shaka, ikiwa huyo ni mwalimu wangu, baba. Ujambo. Hii ni nzuri. Lakini baadaye Pedro alimwambia alipokuwa akiondoka. Nikamwambia, Mungu aendelee kukubariki, Mungu akulinde. Kwamba Pedro ni mnafiki, ni jambazi, ni mnyama mbaya, ni miongoni mwa majambazi hao. Ni mtu mwenye madhara. Hitler hakuwa mtu karibu na mtu huyo. Tazama, Hitler alikuwa mhalifu wa nyuma ya nyumba, wakati huyu ni mhalifu wa ulimwengu. Haya, leo nampa hukumu.
Nina hakika kwamba ataibeba hukumu hiyo. Tunampa hapa kwenye mahakama ya Kristo kwa kiwango cha neema tuliyompa. Tutasimama tukiwa tumebarikiwa kwa kila baraka.